Hello everyone, I'm SK Raut here. तो आज क्लास माध्यम रे हम गोटे नुआ कथा आज आरंभ करवा आगु बहुत सारा जिनस हम आरंभ करिछे. This session will focus on important judicial cases in India. Basically जो important judicial cases गुरा इंडिया रे सब चलची बा जो known cases अच्छी, so they are also important, very much important for civil service examinations and other examinations too. The important significant cases of India series रे हमें different case गुरा देखिबा. एटा जानिबा द्वारा हमें सुप्रीम कोर्ट रो involvement in pursuing democratic values and in ensuring constitutional morality in the country will be understood very much. So democracy रो function रे judiciary रो role टा केमती day by day changing होउची एवं day by day केमती सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट्स एमाने डेमोक्रेटिक वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहोल्ड करिया चेष्टा करछंती एवं कौन कौन केस सब पूर्वरु हेई आसीची केस रो डायमेंशन कौन काहे की केस हुए एवं को केस गुरा बहुत लैंडमार्क अच्छी बहुत सारा इश्यू अच्छी एवं केस रो इम्पैक्ट कौन रही माने सोसाइटी उपरे ये सब विषय में जानिबा सेति केस ए जो सीरीज टा मु लॉन्च करिवि बोली डिसाइड करिछि. तो डिफरेंट केसेस रो जो डायमेंशन देखिबा सेटा जुडिशियल केसेस रो प्रभाव बहुत पड़िछि. बहुत सारा एरिया ऊपर जुडिशियरी केसेस करछि. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ केसेस, but we will not discuss all the cases. We will discuss some important cases that are very much important from our exam point of view. जोटा हमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु आवश्यक अछि ता ऊपर हमें धीरे धीरे विचार करिबा जुडिशियल केसेस गुरा. बाकी केस गुरा जो करा जाए बा जुडिशियरी रे जो केस रो वर्डिक्ट ऐसे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट रो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट गुरा समाज उपरे बा देशर शासन व्यवस्था उपरे किंबा गवर्नेंस सिस्टम उपरे हो कि हमर इंस्टीट्यूशनल जो आनुष्ठानिक व्यवस्था अच्छी ता उपरे गंभीर भाव में प्रभाव पकाई थाए एवं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द जुडिशियरी इज प्लेइंग ए वेरी एक्टिव रोल. There are various reasons why judiciary is coming out of its confined cell and being exposed to the public and interfering in the executive and legislative domain. ठीक अच्छे. तो आम ये सीरीज टा आम देखा इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जुडिशियल केसेस बोले आम कहीपर सिग्निफिकेंट जुडिशियल केसेस आम यहाँ रखा जो जो केस गुरा सब जुडिशियल अच्छी बेसिकली यू कैन से जुडिशियल केसेस गुरा बेसिकली आम देखा जो गुरा सब जुडिशियरी रे स्टार्टिंग फ्रॉम माने शंकरी प्रसाद दोराई राजन केस बहुत सारा केस है. आम केस रे देखिबा केस केबे हेइतिला एवं कहा का भीतर केस हेइतिला बेसिकली तो स्टेट एगेंस्ट रे बा गवर्नमेंट एगेंस्ट गवर्नमेंट सहित केस हुए एवं कौन पे हेइतिला इश्यू कौन थिला तार कौन प्रभाव पड़िछि आउटकम कौनटा आम सेतरु आसीचे शिखीचे. ठीक अच्छे. So that is why the learning of a case is very important not for civil service examinations ପାଇଁ cases गुरा देखिबा बहुत important अच्छी. तो रेगुलर क्लास रे हमें गुरा टिके टिके जो पेड जो हमर क्लास अच्छी रेगुलर बैच क्लास गुरा सेतरे पढ़ा जाए. बट ए सीरीज रे हमें सबु जिनस गुरा कंप्लीटली देखिबा. सो एटा को तुमे वॉच करिवो प्रतिदिन 5टा रे मोर YouTube क्लास रहउची. हमें एटा नेक्स्ट वीक रु किछि किछि क्लास इंपोर्टेंट केसेस इन इंडिया ऊपर आनिबा सिग्निफिकेंट केसेस इन इंडिया. तो आज एटार इंट्रोडक्शन दवा पई मु तुमको अनिल पिलाने. तो एटा हम देखिबा कि आज मु आनिछि गोटे नोटेबल जोटा अछि हमर नोटेबल केस अछि के पुट्टास्वामी केस 2017 पिलाने 28 ए जो 2 दिन तळे 28 October
2024 मसीह जस्टिस के पुट्टास्वामी डेथ होता बेंगालुरु रे। जस्टिस के पुट्टास्वामी कर्नाटक जड़े प्रसिद्ध जज थे, कर्नाटक हाईकोर्ट जड़े फेमस जस्टिस थे एवं कैरियर हाईकोर्ट जज भाव से बीती एडवोकेट थे। बेंगालुरु जो आमर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे। बेंगलुरु ब्रांच रो आंध्र प्रदेश रो बैकवर्ड क्लास कमिशन रो चेयरमैन थे एवं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल रो भी चेयरमैन थे। तो बहुत न्यायिक बा जुडिशियल पोस्ट रे से रही एवं तांकर अभिज्ञता थिला। ही डाइड एट द एज ऑफ 98 नानो बा जो हमर कोनती कण सेंटिनरियन बोली कहले हबो। तो तांकर दीर्घ आईन कैरियर भितर से लीगल सिस्टम को बहुत किसी कंट्रीब्यूट करछंती। बट तांकर ई जो केसटा 2012 रे लॉन्च होइतला प्लाने के पुट्टास्वामी केस। इट इज वेरी पॉपुलर केस एज ऑल ऑफ यू नो। सो के पुट्टास्वामी केस रे दिस केस जोटा अच्छे हमर के पुट्टास्वामी केस वर्सेस जोटा के पुट्टास्वामी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया এটা 2017 এটা হচ্ছে 9 জজ বেঞ্চ কেস। 9 জজ বেঞ্চ কেস এটা थिला। ए केस रो ओरिजिन थिला एटा कि 2012 रे ये लॉन्च करतले कारण जते बळे आधार लॉन्च हैला आधार सहित विभिन्न वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट लिंक कले एवं बैंक सहित बैंक अकाउंट सहित आधार को लिंक हैला। सेते बळे के पुट्टास्वामी ए केसटा करथिले कौन पई ना जो आधार रे जो बायोमेट्रिक रहुची लोक मानकर सीटा गवर्नमेंट बा स्टेट ऑर्गन माने मिसयूज करि पारंती जेतु से माने विभिन्न ये करि पारंती एवं लोकंकर ए प्राइवेसी को नष्ट कर दी पारंती। से भୟରେ के पुट्टास्वामी एवं आउ किछि सहकर्मी सहित ए केसटा करथिले। सेति पई ताको नारे केसटा कुआ जाय के पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। के पुट्टास्वामी इटा करिवार कारण थिला कारण आधार अंडर रे पीपुल विल कम अंडर थ्रेट बेली से भाबिले एवं से भाबिले कि जे जदि आधार सब वेलफेयर स्कीम सहित लिंक हबो बा बैंक अकाउंट सहित लिंक हुए ताले सेटा मैंडेटरी जो गवर्नमेंट कला सेति पई सेटा हुए तो लोकर भिन्न भिन्न जो तार प्राइवेसी बेसिकली बायोमेट्रिक पूरा जो रोची से एक्सपोज करि पारे एवं मिसयूज हो पारे जद्वारा द प्राइवेसी ऑफ ए पर्सन विल डेफिनेटली कम अंडर थ्रेट। सो ये जो लैंडमार्क केस थिला एथिरे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट एथिरे 9 जज बेस केस थिला एंड इट वाज मैटर थिला कोन मैटर थिला that is violation of privacy of a person due to Aadhaar linking with state sponsored schemes, state sponsored welfare schemes and बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये जो कथाटा है जे आधार जो लिंक है तो प्राइवेसी ऑफ द मैटर ऑफ ए पर्सन विल बी एक्सपोज्ड
प्राइवेसी ऑफ द पर्सन विल बी एक्सपोज्ड बोली सरकार भाबिले बा जो जज के पुट्टास्वामी बा अदर्स दे थॉट दैट एंड he filed a case in the Supreme Court against these provisions. And in that case, in 2017, the case was launched in, lodged in 2012. Okay, and in this case, the Supreme Court held that right to privacy is a intrinsic, माने inherent right in fundamental rights, especially under right to life and personal liberty under Article 21. जो प्राइवेसी जो व्यक्ति रो एक्सपोज हबो, कारण जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी अच्छी, जो राइट टू जीवन अधिकार, जो जीवन बा स्वाधीनता अधिकार जो अच्छी, सेटा केवल सेटा सेतिबेले सुरक्षित रहइबो जेतेबेले व्यक्तिर प्राइवेसी सुरक्षित रहइबो। यदि गवर्नमेंट तार व्यक्तिर प्राइवेसी बा तार इंटरनल पर्सनल मैटर को एक्सपोज कर दबो, ताहले व्यक्तिर स्वाभिमान बा लज्जा एसबु जिनस हटि जिवो, बस से समाज रे किछि गोटे माने कौन समाज रे किछि गोटे हार्मोनी रहिबनी बा व्यक्तिर निजस्व जो पराकाष्ठा निजर प्राइवेसी से सिक्योर करि परिबनी, जा द्वारा व्यक्ति एक्सपोज ही पारे। एवरी इंडिविजुअल हैज सम फ्लॉज, तेणु प्रत्येक व्यक्तिर निजर निजर प्राइवेसी अच्छी, निजर निजर चॉइस अच्छी, निजर निजर रिक्वायरमेंट अच्छी, निजर निजर हैबिट्स अच्छी बा निजर निजर जो पसंद अच्छी, तो सेगुड़ा ता निजर जेपर्यंत सेटा व्यक्ति और समाज रो किछि क्षति करूनी, जेपर्यंत सेटा अन्य व्यक्ति रो किछि क्षति करूनी, से पर्यंत प्राइवेसी भलो। तो माने सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस डिक्लेयर्ड दैट राइट टू प्राइवेसी जोटा एमपी शर्मा केस 1954 और खरक सिंह केस गोटे हितला प्लाने 1964, जो थे राइट टू प्राइवेसी को एते प्रायोरिटाइज करा जाय नथिला एवं सेगुड़ा को ओवरटेक करिया पे जदियो परे बहुत केस होता, किंतु सेगुड़ा लार्जर बेंच केस थिले, जो हम कहूचे एमपी शर्मा केस सेटा भी से 8 जज बेंच थिला। आउ तापरे जो अच्छी हमर कौन जो खरक सिंह केस जो अच्छी 1964 सेटा भी गोटे 7 जज बेंच ना एमती कौन थिला। तो से जो केस गुरा हेइतिला जो खरक सिंह केस 1964 और एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र केस 1954, एथिरे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट भावरे ग्रहण करा जाई नथिला। तेणु से जो तापरे जदियो बहुत सारा केस हेइछि एमपी शर्मा केस लिखि दूची एटा एमपी शर्मा जो प्रीवियस केसेस जदि हम देखिबा प्रीवियस केसेस रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी डेला एमपी शर्मा केस वर्सेस एमपी शर्मा केस एटा 1954 आउ गोटे खरक सिंह केस खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस 1964 रे। These two cases did not support the idea that right to privacy is a fundamental right एवं ए दुईटा केस पर सुप्रीम कोर्ट रे आउरी अनेक केस हेइछि एवं सेतिरे राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट भाव में ग्रहण करा जाइछि, किंतु जेहेतु ए केस रो जज संख्या अधिका थिला तेन प्रेसिडेंशियल ग्राउंड रे से मानक ग्रहण करा ही नथिला। ता माने अप टू के पुट्टास्वामी केस पर्यंत राइट टू प्राइवेसी को संविधान रो मौलिक अधिकार भाव में ग्रहण करा जाई नथिला। जदियो ए दुईटा केस पर बहुत सारा केसेस हेइछि जो
राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट भाव में घोषणा करा जायछि किंतु जेहेतु माने लार्जर बेंच केस थिले 6 और 8 बेंचेस 8 और 6 बेंचेस बोले एमपी शर्मा 8 और खरक सिंह 6 बेंचेस जज माने 6 जणिया जज 8 जणिया जज बेंच थिला सेति पई से जो परवर्ती केस गुडा जो हेतला राइट टू प्राइवेसी रो सेटार किछि गुरुत्व रहि नथिला बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंशियल ग्राउंड रे ताको कटा जायतिला किंतु के पुट्टास्वामी केस रे 9 जज बेंच थिला एवं इन के पुट्टास्वामी केस यू आर गेटिंग द पॉइंट इन के पुट्टास्वामी केस रे जोटा अछि हमरो के पुट्टास्वामी केस रे राइट टू प्राइवेसी को ओके सो देखिबा हमें in August 24 बोले August 2017 the apex court माने कौन सुप्रीम कोर्ट the apex court held that right to privacy is a fundamental right under Article 21. It is also inherent. It is also inherent in Article 14 and Article 19. ठीक अच्छी तो सुप्रीम कोर्ट करो एक कथाटा सुप्रीम कोर्ट करो एक कथाटा ठीक अच्छी सुप्रीम कोर्ट रे कथाटा गोटे रिवोल्यूशनरी परिवर्तन आनिथिला एटीट्यूड रे जदियो सुप्रीम कोर्ट आधार बिल को अपहेल्ड करथिला आधार को टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करनथिला किंतु सेतिरे किछि मॉडिफिकेशन करिया पई कहितला सेति पई 2018 रे आधार को मॉडिफाई कराई कि किछिटा कंडीशन कराई कि 2018 रे आधार बिल अगेन अमेंडमेंट बिल पास करागला तेणु सुप्रीम कोर्ट को एक कथाटा सरकार ग्रहण करथिले एवं किछि मात्रा रे एटा को करथिले प्लान राइट टू प्राइवेसी माने कोन राइट टू प्राइवेसी जो सुप्रीम कोर्ट कहिले कि आर्टिकल 21 अंडर रे इनहेरेंट हबो तार अर्थ कोन राइट टू प्राइवेसी रो तीनटा मेजर डायमेंशन गोटे हला बॉडीली ऑटोनॉमी ठीक अछि शरीर सहित हमें कौन करूचे कोटी करूचे के स्पा को जाउची के कोटी जाउची तो सेठी सरकार सेगुरा ताकू देखि परिबनी सेठी सीसीटीवी कैमेरा लागिबा तेणु लोकर निजर शरीर उपरे संपूर्ण अधिकार अछि तेणु सेठी राष्ट्र कोनोसी इंटरफेरेंस रहिबा कथा नु राष्ट्र एंटी रेस्ट्रिक्ट करिया कथा नु जोटा ताकू कण लोक को अपमानजनक हो एवं आउ गोटे इनफॉर्मेशनल प्राइवेसी गोटे बॉडीली प्राइवेसी रहिबा दरकार लोकर आउ इनफॉर्मेशन प्राइवेसी जो इनफॉर्मेशन मु देई परिबी न देई परिबी सेटा मो ऊपर डिपेंड करछि एवं थर्ड डायमेंशन हला प्राइवेसी ऑफ चॉइस तो गोटे हला बॉडीली प्राइवेसी गोटे हला इनफॉर्मेशनल प्राइवेसी गोटे हला चॉइस रो प्राइवेसी तेणु सेटा मो पाखे रही ठीक अच्छे दीज आर द थिंग्स which the right to privacy is there तेणु right to privacy is not की guaranteed under that is article 21 it promotes bodily privacy bodily autonomy अर्थात शारीरिक ऑटोनॉमी रकार हमर शरीर आम निज शरीर सहित आम कौन करूचे कौन नहीं सेटा हमर निजर प्राइवेसी गोटे इनफॉर्मेशनल प्राइवेसी आ गोटे चॉइस रो प्राइवेसी तो जेहेतु आजिका जुगरे सोशल मीडिया रो एडवेंट होइछि विभिन्न प्रकार इनफॉर्मेशन गुरा में
सोशल मीडिया रे अपलोड करूचे तेणु तार गोटे प्राइवेसी रहा दरकार बिना परमिशन रे बिना अप्रूवाल रे व्यक्तिर कौन इनफॉरमेशन मिसयूज हवा कथा नुहे तो मैंने सुप्रीम कोर्ट रो मेजर थिला एटा कि व्यक्ति को व्यक्तिर जो प्राइवेसी अच्छी जो तार व्यक्तिगत कथा अच्छी ताकू राष्ट्रर राष्ट्र बा सरकार ताकू मिसयूज न करू कि कौन सी संस्था ताकू मिसयूज न करू एवं व्यक्ति सुरक्षित रहो तेणु राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी संज्ञा दिन को दिन बदलिबारे लगी कारण 1950 मसीहार राइट टू लाइफ आज राइट टू लाइफ भितर आकाश पाताल तफात अच्छी जीवन माने नुह खाली जड़े बंची रहा निश्वास प्रश्वास नवाटा जीवन नुहे जीवन माने एटा मनुष्य जीवन जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 रे कुहाई सेटा कहार लाइफ ह्यूमन्स लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग तेणु ह्यूमन बीइंग रो लाइफ पई बहुत किछि जिनिस आवश्यक एवं समाज परिवर्तन हवा सहित व्यक्तिर जो जीवन रा आभिमुख्य भी परिवर्तन होउछि सेतिपई ये सब नुआ नुआ जिनस आसूची तेणु वर्तमान राइट टू प्राइवेसी गोटे फंडामेंटल राइट भाव एस्टाब्लिश है इंडिया रे एवं थैंक्स टू के पुट्टास्वामी द नोटेड जज सो वी शुड रिमेंबर दिस ग्रेट सोल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ट्रेमेंडस कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन सोसाइटी for his tremendous contribution to securing the privacy of human being in this digital world. So जो digitized है समाज तार जितनी की प्रोस अच्छी तार सेती कॉन्स भी अच्छी जितनी की एडवांटेजेस अच्छी सेती की डिसएडवांटेजेस अच्छी तेणु आज ये डिजिटाइज्ड जुगरे जोटी व्यक्तिर सब किसी जिनस एक्सपोज होबार संभावना अच्छी से समय रे the verdict of the Supreme Court in the famous K Puttaswamy case is noteworthy. But प्लेन right to privacy जोटा दिया जाइची के पुट्टास्वामी केस करो गोटे माने गोटे जुगान्तकारी कंट्रीब्यूशन जोटा कि टाइम विल रिमेंबर हिम सोसाइटी विल रिमेंबर हिम इन जनरेशन टू कम एवं लास्ट टाइम रे से बहुत सारा काम करथिले भी ये जो माइलस्टोन से तैयारी करले एवं गोटे जस्टिस हिसाब रे समाज को जो अवदान देले ता निश्चित भाव रे अविस्मरणीय किंतु कथा उठे कि राइट टू प्राइवेसी इज इट एब्सोल्यूट राइट नो इट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट द स्टेट कैन इम्पोज restriction on right to privacy on various dimensions on various dimension upare state नहीं जाई परिबो it can be restricted by the state action under a law or a specific law under जदि सेटा restriction है परिबो रही परिबो एवं if it is restricted in the interest of the state legitimate interest of the state सरकार धर कोविड समय हो कि सरकार विभिन्न जगह बायोमेट्रिक मागुची जोटा लेजिटमेट जिन राशन आणुचे से बायोमेट्रिक मागुची फिंगर आधार लिंक होची कि होची तो जोटी दरकार से रेस्ट्रिक्टेड तमाने राइट टू लाइफ is not right to privacy which is declared to be a fundamental right under article 21 is not an absolute right. It can be restricted on the ground that to be fair, just and reasonable. ठीक है so हम लिखी दवा इटा so that is a good point to write. Right to privacy is not a fundamental, not an absolute right. It can be restricted under a law
or mandate that should be just, fair and reasonable. ठीक है पिलाने, that can be okay. So that can be a major point to remember. So K Puttaswamy, Justice K Puttaswamy करो ये अवदान निश्चित भाव अविस्मरणीय रहिबो। ठीक अछि, सेतिपई with a view to protect the privacy of the persons, the government has enacted Data Protection Act, Digital Protection Full Act Data Protection Act 2023 enacted कराइछि on the basis of this verdict of the Supreme Court. The government of India has enacted Data Protection Act 2023. Okay, so एमती आमे बहुत सारा केस डिस्कशन करिबा, बहुत सारा जुडिशियल एंगल देखिबा, जेतु पॉलिटी पई बा करंट अफेयर्स पई बा हमर एसे राइटिंग पई जुडिशियल केसेस रो बहुत आवश्यकता रहिछि। सिग्निफिकेंट केसेस इन इंडिया सीरीज रे मु नै कि आसीबे भिन्न भिन्न केस। आज गोटे तुमको सैंपल मो आनी के पुट्टास्वामी बिकज जेहेतु ये दिवंग बा यही महान आत्मांकर सद्गति पई एटा गोटे क्लास आम पई गोटे ट्रिब्यूट हबो तांको प्रति। ए क्लासटा गोटे ट्रिब्यूट हबो। आस समस्ते से जो प्रसिद्ध जज बा फेमस जज के पुट्टास्वामी अमर आत्मार सद्गति कामना करिबा। एवं एई केस रु मु आरंभ करिबी सिग्निफिकेंट जुडिशियल केसेस सीरीज इन इंडिया सीरीज रे भिन्न भिन्न इंपोर्टेंट केस उपरे तुम मन को परिचय करेबी। ठीक अछि, सो लगे रहो एवरी डे एट क्लास 5 रे वाईटी क्लास रे यूट्यूब क्लासेस रे आई विल कम with different notable cases and also their socio political cultural and economic impact by dimensions। ठीक है बुलाने, तो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो एवं ठीक से प्रिपेयर जारी रखो। डोंट बी डिप्रेस्ड, केबे केबे लाइफ रे डिप्रेस होबनी, केबे लाइफ रे कोनोसी कथा को सीरियसली एते थिंक करिबा माने ताकू सीरियसली नबनी। बेटर फोकस ऑन योर कैरियर। प्रॉब्लम आसीबो, प्रॉब्लम रहिबो, बट तुमे गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य पथ रे अग्रगति हो। सेति पई बहुत महापुरुष माने कहिसंती कि जदि आमे निजर जिद्दी रे बा जदि टेनासिटी ऑफ पर्पस रहिला, जदि हमर उद्देश्य रे बा हमर लक्ष्य रे दृढ़ता रहिला, तेला आमे लक्ष्य साधन करिबारे कोनोसी असुविधा हबनी। ठीक अछि, बाकी मु कहिछि सिविल प्रिपरेशन होतिबा पिला माने हाथी मल्ले लक्ष्य जिले लक्ष्य। ठीक अछि, सो प्रिपेयर हो, आराम से रहो एवं अटेम्प्ट नियो, भिन्न भिन्न अटेम्प्ट नियो। सिविल रे ओपीएससी यूपीएससी पे अटेम्प्ट नियो। प्लेटफॉर्म तुम पे रेडी कि अच्छी आउ कॉस्टली नुह तुमरो एक जो एजुकेशन आउ कॉस्टली नुह, कारण वी हैव कम टू प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट qualitative education, qualitative guidance at a very affordable price. So it is universally acceptable now। वर्तमान ओडिशा रो कोण अनुकोण रहउतिबा पिला माने बा जे कोनोसी स्टेटस रो पिला माने भी क्वालिटी एजुकेशन पाई परिबे। तारो समस्त श्रेय आडा 247 ओपीएससी, इट विल गो टू द आडा 247 ओपीएससी प्लेटफॉर्म। Thanks to ADA 24 OPSC platform, it is providing very affordable, very quality education at a very affordable price. That is essential for a state, developing state like Odisha. So let us make our state more progressive। तुम एबे देखिथिबो हमर जो इकोनॉमी रिपोर्ट बाहरी छि सेतरे महाराष्ट्र, वेस्टर्न और
southern state mane kete developed progress କରୁଛନ୍ତି, but it is sad to note that eastern states are still lagging behind in economic, socio-economic development. So why should we be underdeveloped? Why should Odisha remain underdeveloped? Because why it is underdeveloped? Because we are not putting our best. So aso samaste lagiba amo kshetra re kon kari pariba, aso samaste UPSC ro IAS IPS adhika sankhya re naba ebong compete kariba. Okay, so that state will develop. ଯେତେ ଯେତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହିବେ, ଯେତେ ଓଡ଼ିଶା ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ରହିବେ, ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ IITN ରହିବେ, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋକ୍ରାଟ୍ସ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାର, so they will definitely contribute, you will definitely contribute to make the state a developed one and at par with other states. ठीक ଅଛି? So this is the target. So thank you very much for being with me. I will come back with this series in the next week. So keep watching my YouTube classes at 5 PM every day. And जो ये गुरा रही आमर सब कोर्स गुरा मु कही देइस तुमको आउ टिके कही दूची रे बाबा, एगुरा सब आरंभ हो जाइए, सब बैच 2.0 तो ऑलरेडी लॉन्च हबो, 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हबो 31st रे. The admission is going on. So this is Diwali time, and you can if you decide, then join it, because you will get more discounts on the prices. And no Odisha is specific to Odisha, and it will enhance your knowledge in Odisha history, polity, economy, current affairs, ecology and other aspects, and it will also prepare you to write long type answers for your civil service examination based upon Odisha. ठीक है? So that is there. So just join it if you can, then that is there. ठीक है? So that's all about this course. So I am from this ADA 24 OPSC wishes you, on behalf of the ADA 247 OPSC, I wish a happy Diwali to all of you. Celebrate the festival of light in all spirit and happiness. May this festival of light enkindle light of success and happiness in all of you. Thank you very much.